This conference will now be recorded. Okay, so today is day one to understand about the Active Directory services, right? Okay. I'm going to start from the very basic, what is AD, Mm-hmm. and try to install Windows Server 2016. I hope you want to learn in 2016 because if you have idea about Server 2016, you are able to manage 2012 and 2019 as well. So Okay. just wanted to confirm which server you are looking. 2012 या 2016 पे हम लोग कर सकते हैं. आप 2016 पे करा क्योंकि लेटेस्ट पे ज़्यादा सही रहेगा सर। Exactly, right. ठीक है हुँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू मूव आवर सेल्फ फ्रॉम 2012 टू 2016. 19 हुँ, और हुँ, हुँ। 2022 में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट 16 जो है बेस्ट रहेगा अपने पास, राइट? यस, 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 यस। Okay, cool. So what is AD? As per the name suggests, Active Directory. So let me explain you about the complete information about the Active Directory. हुँ, हुँ, So Active Directory is a service which is available in our server operating system, Microsoft Server operating system, and हुँ, Microsoft introduced the Active Directory services with the Windows NT Server in year of 1995. जो पहला डोमेन इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश किया गया, डोमेन एंड क्लाइंट इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश किया गया वो 1995 में विद द हेल्प ऑफ एनटी सर्वर. जो पहला एंटी एनटीएफएस बेस्ड फॉर्मेटेड सर्वर था वो एनटी सर्वर था इन ईयर ऑफ 1995. दैट टाइम हम विंडोज 98 और मिलेनियम को एज ए क्लाइंट यूज करते थे. देन वी हैव अ सर्वर 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 एंड 2022. मीन्स विंडोज सर्वर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है और बोल सकते हो कि एक ऐसा सेटअप है जो एवरग्रीन मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है. छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, we must need to use server OS. Is that correct? यस सर, करेक्ट, डेफिनिटली करेक्ट। Now, question is what is AD? So you can say that AD is a role type of role, हुँ, or हुँ, you can say that the Active Directory provides centralized control. It is a basically database responsible to contain the information about the objects and container. For example, this is our organization and we have a n number of machines are available. हुँ, हुँ, यहाँ पे बहुत सारे computers available हैं. These machines are contain client OS. यस। So if you want to control the multiple client operating system, client OS based machine, you must need to use at least one domain controller. You must need to use at least one server operating system ताकि इनको आप control कर सके. Is that हुँ, हुँ, correct? करेक्ट। Now, but before that, just wanted to clear one more point. In case of networking, so we have a two different way to set up our network environment. If we talk about logical networking, so logical networking is categorized in two different parts. हुँ, हुँ, One is P2P network, right, which is really important यस। for us. We know about हुँ, हुँ, P2P network, and second is related to the domain client network. Do you have any यस, idea about P2P network? यस, यस, P2P नेटवर्क आर ऑफ 2 टाइप्स ना, वर्क ग्रुप और डोमेन एनवायरनमेंट। Exactly, yes. So what about P2P network? P2P नेटवर्क आई थिंक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पीयर नेटवर्क की रेटिंग आई थिंक इज देयर। Mm-hmm. P2P network, as per the name suggests, in this case, हर एक सिस्टम जो है अपना खुद का ऑनर रहेगा. हुँ, 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 For example, we have a number of machines are available और हर एक मशीन हुँ, communicate कर रही है centralized device switch से, like हुँ, this. हुँ, 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 And system must be a part of work group. यहाँ पे हर एक सिस्टम जो है वर्क ग्रुप के केस में है. वी आर एबल टू शेयर द डेटा. इसका जो यूसेज है, we can हुँ, use peer-to-peer network for the shared data.
We यस। are able to use it for shared internet connection, हम्म। right? राइट राइट। But each machine are self-owner. करेक्ट। Each machine are self-owner in the sense कि कोई भी सिस्टम एक दूसरे के ऊपर कोई भी पॉलिसीज अप्लाई नहीं कर सकता है। मीन्स कोई भी सेटिंग जीपीओ या कोई अदर एक्टिविटी टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि हर एक मशीन जो है वर्क ग्रुप से लॉगिन है एंड सिस्टम मस्ट बी लॉगिन थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स रहेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रही है। इसका जो तो सर, यूसेज है इस वो केस में बहुत अगर ही मैं अपना लैपटॉप का एग्जांपल लूं, ऑफिस का लैपटॉप, तो ये वर्क ग्रुप में P2P नेटवर्क में है? नहीं, P2P नहीं, बिकॉज यू आर यूजिंग अ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखोगे तो आपका सिस्टम जो है ना हम्म। ऑफिस के डोमेन के साथ एसोसिएटेड होगा। यस, डोमेन के साथ है, बट इसमें हम कोई पॉलिसी नहीं लगा सकते, जैसा अभी आपने कह रहा है, इसमें राइट, कोई पॉलिसी बिकॉज नहीं। वी the control of our laptop managed by the हम्म। organization। जो ओके ऑफिस ओके। में डोमेन इस्टेब्लिश किया गया है ना वीपीएन के थ्रू हम कनेक्टिविटी देते हैं और हम्म। जो डोमेन है ऑफिस में वो हमारे मशीन्स को कंट्रोल करते हैं। ओके। क्लियर? क्लियर। नाउ P2P नेटवर्क मीन्स अगर आपको छोटे टास्क परफॉर्म करने हैं, इंटरनेट शेयरिंग हो गया, छोटा सा डेटा ट्रांसफर करना है एक मशीन से दूसरे मशीन पे, दैट टाइम इट वर्क। ओके। Now, domain client networking is also important for us. Domain client networking की बात करें तो as per हम्म। the name suggests, the meaning of domain client, इसमें आपको एक centralized device लगाना पड़ेगा। I'm talking about the ADDS server. This is हम्म। our domain controller, ओके। centralized device, and these all are the client operating system. Windows 10, Windows 7, Windows 11 operating system considered as a client OS. ओके। Same, we added a one मीडिएटर जिसको हम स्विच बोलते हैं, हम्म। domain controller, and these all are the client operating system. The client OS may be started from 7, 8, 10, and 11 operating system. About the server OS, we have server 2K8, 2012, 2016, 2019 and 2022। इनमें से कोई सा भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। इज दैट करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। ओके, ग्रेट। Now, so let's talk about prerequisite to install the Active Directory domain services. No, before that, we need to proceed with about server machine. I'm not talking about the operating system. We should know about the server machine. ठीक है? तो सर्वर की ठीक है। बात करें तो डेफिनेटली डेल के सर्वर्स हैं, हम्म। एचपी के सर्वर्स हैं, ठीक है। ठीक है ना? Lenovo server also available. So it's हम्म। also depend upon the types of hardware that you are using. ओके। इनका जो हार्डवेयर रहता है, इनके अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं, टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। जो नॉर्मल मशीन हम इस्तेमाल करते हैं ना, इनसे हम्म। टोटली डिफरेंट रहते हैं। ओके। And server contain components, important components like as I hope you know about the ILO port, ID rack, ये सभी हम्म। components of server machine, ठीक है? ठीक है। So component of server means like as सर्वर। ILO port हम्म। and ID rack. Do you have idea about these two important component? आईडी रैक के बारे देखा तो है। आईडी आईएलओ क्या होता है सर? ILO port which is introduced by HP, ओके। ID rack introduced by Dell। ओके। ओके। तो ठीक ये है, नाम जो अलग डेल अलग का है सेम चीज? सेम चीज है बट नाम अलग है। पहले ये डी ओके रैक ओके। था,
अब आईडी हम्म। रैक हो गया। ओके ओके। और वेंडर अलग अलग समझे? है, इसलिए नाम भी अलग अलग है। हाँ एग्जैक्टली, काम दोनों का सेम है, इक्वल, नो नो डिफरेंस बिटवीन द टास्क। ठीक है, हम्म। लेकिन यू नो दैट हम लोग रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। तो इन केस ओके ऑफ ओके। रिमोट सपोर्ट, हमारा जो क्लाइंट है वो यूएस में बैठा है, यूके में बैठा है, एंड आर हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द हार्डवेयर आर सर्वर फ्रॉम इंडिया लोकेशन, तो डेफिनेटली वी हैव हम्म ऑप्शन टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। केवल हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, राइट? एंड थिंक हम्म। अबाउट कि अगर क्लाइंट की साइड पे कोई बंदा है नहीं और सर्वर आपका डाउन हो गया, तो हाँ वी जी। डोंट हैव एक्सेस, राइट? वी आर अनेबल टू यस। एक्सेस आवर मशीन। दैट्स व्हाई आईडी रैक आईएलओ पोर्ट कम इनटू द पिक्चर, जिसको आप ब्राउजर से कनेक्ट कर पाएंगे, इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्टिविटी दे पाएंगे। एंड इफ यू हैव एक्सेस ऑफ आईएलओ, देन वी आर एबल टू टर्न ऑन, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट द सर्वर। मीन्स एक ओके। तरीके से फिजिकल कंट्रोल आपको मिल जाएगा, नो मैटर यू आर यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन टू मैनेज अवर सर्वर्स, लेकिन आपको जस्ट लाइक अ फिजिकल राइट्स मिल जाएंगे जिससे आप कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। इज दैट करेक्ट? द करेक्ट यूसेज करेक्ट। ऑफ आईएलओ पोर्ट। यस। Cool. Now, I'm going to move ourselves for installation of server operating system. ठीक है, so about the installation procedure, same just like a Windows 10 or Windows 7 जैसे हम इंस्टॉल करते हैं, as it is हम इसको इंस्टॉल करेंगे, but you should know about the hardware requirement, right? ओके। So in case of hardware requirement, minimum we just need to proceed with 4 gig of RAM, right? राइट। 2 core of processor, up to 80 gig of hard drive, ठीक है। and Ethernet card. ओके। These all are the prerequisites to install the server विंडोज। operating system. ओके। Okay, so it's mandatory to create a setup. So what I'm going to do, I have already installed VMware workstation that we'll use for the server machine. तो ये VMware workstation है अपने पास। ठीक है। I'm going to create one virtual machine. File पे गए, new पे गए, next select your ISO image. तो our agenda to install Windows Server operating system, right? राइट। ठीक है, so I'm going to select server OS, और यहाँ पे हमने server 2016 और 90 दोनों अवेलेबल है। Proceed with server 2016, next must need to provide the operating system password, user ID and password mandatory। डेटा सेंटर पे मूव करते हैं, एंड यू ऑलवेज प्रोसीड विद डेटा सेंटर GUI, बिकॉज इन केस ऑफ कोर आपको GUI एक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ CLI का एक्सेस मिलेगा अगर आप कोर पे इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। इज दैट करेक्ट? ओके। करेक्ट। नेक्स्ट, and select the location where you want to put your virtual machine. So I wanted to put in our C drive, Windows Server 2016, 60 gig hard disk. I'm going to proceed with the same. Next, about the RAM, I wanted to put 4 gig of RAM, make it bridge connection, क्योंकि हम यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन यूज कर रहे हैं, तो ब्रिज कनेक्शन में ये डायरेक्टली हमारे सिस्टम से IP एड्रेस उठा लेगा। ओके। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। Firstly, we need to install the Windows Server 2016, and after that, we'll discuss about the roles and features. ओके। Clear? क्लियर। Okay, just wanted to ask, like, I hope you have idea about how to make a bootable pen drive. You know? यस यस। ठीक है, वर्क स्टेशन स्टार्ट।
सर इसको स्विच टू डेस्कटॉप मोड पे करूँ क्या? थोड़ी सी स्क्रीन ना छोटी आ रही है। हाँ, डेस्कटॉप मोड पे कर दो। डाउनलोड द ऐप के लिए आने लगी है इस पे। सर ये आप अभी सर्वर 2016 इंस्टॉल कर रहे हैं? Yeah, just need to install server 2016. VMware के थ्रू है? VMware workstation, yes. तो सर ये जैसे हमें बनाना होगा तो ये VMware परचेज करना पड़ेगा या एज़ोर पे जाके बना सकते हैं हम? Azure पे इंस्टॉलेशन तो नहीं मिल पाएगा, बट Azure पे सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं, सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ओके। ओके, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक आवर विंडोज 10 या विंडोज 7 जैसे हम इंस्टॉल करते हैं ना, एज इट इज हम सर्वर 2016 को इंस्टॉल करेंगे। वी जस्ट नीड टू असाइन द करेक्ट ISO इमेज, ठीक है। एंड ओके, here we are able to find n number of
मीन्स टाइप्स ऑफ विंडोज सर्वर 2016। एक तो अपने पास स्टैंडर्ड है, दूसरा डेटा सेंटर है। तो मैं नो द गैप बिटवीन स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर। स्टैंडर्ड छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता होगा और ये जो है अपना दूसरा वाला ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता होगा। Okay, एम आई so करेक्ट? Abhi, just wanted to modify, just wanted to add few things. It's not related to the small and big organization, ठीक है? Actually, data center का use किया जाता है if you want to set up a virtualization, ठीक है? ओके, In future, अगर आप Hyper-V वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, VMware के environment में अगर आप virtualization सेटअप करना चाहते हैं, तो data center is most compatible operating system with virtualization। और ओके, स्टैंडर्ड की बात करें तो ये हमारे कंट्रोल के लिए, जो नॉर्मल यूसेज के लिए उसके लिए रहता है। डेटा सेंटर हुँ, ऑलवेज प्रिफर फॉर द वर्चुअल इन्वायरमेंट। ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद डेटा सेंटर विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, बिकॉज वी वांटेड टू परफॉर्म ऑल द टास्क यूजिंग जीयूआई। ठीक है, तो आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे जाएंगे। ओके, सिंपल सा एक्सेप्ट द टर्म्स, कस्टम इंस्टॉलेशन विंडोज। यहाँ पे 60 गीग की हार्ड डिस्क हमने प्रोवाइड की थी एंड वी जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर द इंस्टॉलेशन। So hardly it will take 5 to 7 minutes. Once our Windows Server 2016 installed, we will proceed for the another step like as a prerequisite to configure Active Directory domain services. AD को ओके, इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट विल इंस्टॉल वन क्लाइंट मशीन, विंडोज 10 या विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे फॉर क्लाइंट ओएस, ताकि हम विंडोज सर्वर और क्लाइंट दोनों के तरीके से यूटिलाइज कर सकें। राइट, ठीक है। ठीक है। बूटेबल पेन ड्राइव आप बना लेते हो? हाउ वी कैन क्रिएट अ बूटेबल पेन ड्राइव? बनाया तो नहीं है बट आइडिया है कैसे करते हैं, फॉर्मेट करके उसका आईएसओ इमेज वगैरह रखना होता है और उसके बाद प्रोसेस करते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर इंस्टॉलिंग द ओएस इन VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, अभी हम हुँ, हुँ, वर्चुअल सेटअप का इस्तेमाल करके ना हुँ, ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं, बट इन रियल इन्वायरमेंट यू नीड टू इंस्टॉल ऑन बेस मशीन। करेक्ट, करेक्ट, आपको करेक्ट, आपको करेक्ट, बेस मशीन में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हमारे फिजिकल हार्डवेयर रहता है ना, वहाँ पे हुँ, हमें हुँ, इसको हुँ, इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। मीनवाइल लेट्स टॉक अबाउट identification of our server dashboard। ठीक है, we should know about the number of options or features which are available on server dashboard। तो पहले हम सर्वर डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे। द कोर कंपोनेंट ऑफ सर्वर डैशबोर्ड, यू नो दैट अबाउट रोल्स एंड फीचर्स। किसी भी सर्वर ओएस की बात करें ना, तो दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज कंटेन करके रखता है। वन इज रोल एंड अनदर इज फीचर। फीचर, सो हाउ मेनी रोल्स आर अवेलेबल? रोल्स, How many roles and features are available? रोल्स तो सर सर्वर के रोल्स, Windows Server roles, yes। इनका तो यही रोल होता है सर कि जैसे मतलब अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Hmm. विंडो सर्वर प्रोवाइड द सर्विसेज 52, 17। Okay. 17 different roles and up to 52 features contained by the Windows Server 2016. The ओके, roles are ADDS, ADCS, ADFS, correct? Internet Information Services, DSCP, DNS, ये सभी जो आपके कंसीडर किए जाते हैं वो एज ए रोल कंसीडर किए जाते हैं। ओके, ठीक है ना? तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रोल इन द सेंस फीचर्स ऑफ आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ADDS हो गया या ADCS हो गया, IIS हो गया। ठीक है, DNS ओके, इज अ टाइप ऑफ रोल,
DSCP is a type of role, ठीक है ना? These हुँ, all are the role. या आप नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज मैनेज करते हैं, बीपीएन वगैरह, दिस हुँ, ऑल हुँ। आर द टाइप्स ऑफ रोल। एफएसएमओ भी फीचर्स इसी में की आती बात, है सर? सॉरी, एफएसएमओ रोल जो होती है? नो नो, एफएसएम रोल इज अ फीचर, वो दिखता नहीं, ओके, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं। ओके, ओके। फीचर्स लाइक एज अ सर्वर बैकअप, ठीक है ना, डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, दीज ऑल हुँ, आर द टाइप्स ऑफ फीचर्स। तो इस तरीके के अपने पास 17 रोल्स हैं और 52 फीचर्स हैं। ग्रुप पॉलिसीज ठीक हो है। गई, ये आपका फीचर्स में काउंट होता है। हुँ, हुँ, जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं तो ग्रुप पॉलिसी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, डीएनएस अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला के 17 डिफरेंट रोल्स हैं, जिसमें एक विंटेल इंजीनियर को एटलीस्ट 8 to 10 डिफरेंट रोल्स अच्छी तरीके से आने चाहिए। एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इंजीनियर को हुँ, कम से कम 8 से 10 रोल अच्छी तरीके से आने चाहिए, करेक्ट? करेक्ट, Okay, our system is installed successfully. So we are using Windows Server operating system over a VMware workstation. हमने जो सेटअप बनाया है VMware workstation के ऊपर लगा रखा है, राइट? राइट। एंड वी सक्सेसफुली इंस्टॉल। लेकिन वर्क स्टेशन में क्या होता है ना, यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल वन टूल जिसको हम कहते हैं VMware टूल्स, ताकि हुँ, जो इसका ग्राफिक है, इसकी नेटवर्किंग है, ये सारी चीजें हम आसानी से मैनेज कर पाए। So करेक्ट। let me check. By default install हो जाता है, but sometime you need to install it manually. Wait for few seconds. अभी सर्वर आपका स्मॉल स्क्रीन में आ रहा है, मेड स्क्रीन में आ रहा है, हुँ, कंप्लीट हुँ, स्क्रीन में नहीं आ रहा है। ओनली द रीजन ऑफ लैक ऑफ ड्राइवर्स, ओके, जो कि आपका VMware टूल्स के बाद कंप्लीट तरीके से इंस्टॉल होगा। तो वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, वी नीड टू प्रोसीड विद मैनुअल बिकॉज ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तो आप विंडोज पे राइट क्लिक करोगे एंड हुँ, इंस्टॉल VMware टूल्स पे क्लिक करना है आपने। क्लिक इंस्टॉल। इट्स मैंडेटरी, ताकि हम अपनी मशीन, वर्चुअल मशीन को स्मूथली यूज कर सकें। ठीक है। सर जैसे हमारे ऑफ़िस में ना आईएनपी दे रखा है कई यूज़र्स को और विंडो 10 है हम्म। इंस्टॉल उसमें विंडोज़ सर्वर 2012 R2 इंस्टॉल कर रखा है उन्होंने, तो ये क्या चीज़ है? और कोई लॉगिन करता है ना तो सर्वर 2012 R2 पे लेके जाता है वो और वहाँ से जाके वो लोग लॉगिन करते हैं, वीडियो लॉगिन। नहीं नहीं, आप हाइपर वी इस्तेमाल कर रहे हो क्या ऑर्गेनाइजेशन में? जैसे कि नॉर्मल जैसे मेरा लैपटॉप है, विंडो 10 है, ठीक है? और ठीक है। उनको आईएनपी थिन क्लाइंट दे रखा है उन्होंने और उस पे अच्छा जाके उन अच्छा, लोग ठीक। हाँ, तो उस पे ना विंडोज़ सर्वर 2012 दिखता है, जैसे लॉगिन करके हम्म। करते और उस पे जाके उन लोग वीडियो लॉगिन करते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप, तो उस पे ठीक है। जाके लॉगिन होता है। ठीक है। तो VDI सोल्यूशन उन्होंने स्टैब्लिश कर रखा है ताकि एक इंस्टेंस को, एक मशीन को मल्टीपल RDP दिया जा सके, ठीक है। हुँ, हाँ, VDI हाँ। क्या करता है, एक सिस्टम पे आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर लीजिए, हर एक हाँ, यूजर हाँ। की प्रोफाइल सेपरेट क्रिएट होगी और हर एक बंदा एट ए टाइम मशीन को कनेक्ट कर सकता है। हुँ, हुँ, ऐसे ही होता है। VDI is a service that introduced by Microsoft। Microsoft में इसको RDS के नाम से जानते हुँ, हैं। हुँ। एंड Citrix में भी है, हाइपरवाइजर के VMware, सॉरी, VMware में Horizon के नाम से इस टूल को जानते हैं, और Azure में Azure वर्चुअल डेस्कटॉप के नाम से। अच्छा। VDI सॉल्यूशन के मल्टीपल वे हो सकते हैं सेटअप करने के लिए, डिपेंड करता है हुँ, कि हुँ, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। Citrix यूज करेंगे तो अलग जाएगा, VMware यूज करेंगे तो Horizon, एंड माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो यहाँ पे RDS कहलाता है, ठीक है। और एज्यूर ओके, यूज करेंगे तो एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप कहलाएगा। क्लियर? ओके, ओके।
नाउ वी आर एबल टू एक्सेस अवर कंप्यूटर इन फुल स्क्रीन, वर्चुअल मशीन फुल स्क्रीन में हमें एक्सेस करने को मिल रहा है. एंड दिस इज डैशबोर्ड, इसी पैनल को हम बोलते हैं डैशबोर्ड, राइट. सो इन ओके, डैशबोर्ड वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शन, मैनेज है, टूल्स है, व्यू है, एंड हेल्प है. उसके बाद वेलकम टू द सर्वर मैनेजर, जहाँ पे आप ऐड रोल एंड फीचर्स, ऐड अदर सर्वर टू मैनेज, क्रिएट अ सर्वर ग्रुप, कनेक्ट दिस सर्वर टू क्लाउड सर्विसेज. ये सभी ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं that can help us to manage our server activity. Our agenda to install Active Directory domain services, so you should know about the prerequisite. ठीक है. ठीक है। Installation of Active Directory domain services. Installation of ADDS. ठीक है. Active Directory domain हुँ, services को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, we should know about. The prerequisites are, it's mandatory server operating system. It may be server 2012, 2016, 2019 और 2022. इनमें से कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. System must be login through local administrator. ठीक है. लोकल एडमिन के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे. नंबर थर्ड, कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस. नंबर फोर, कॉन्फ़िगर, प्रिफर एंड alternate IP address, alternate DNS IP address. Hello, can you hear me? हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ। यस सर। Next, LAN card must be active. हुँ, Number six, minimum 12 gig free space ओके, in operating system drive. ठीक है. हुँ, These all are the prerequisite. अगर आप OS ADDS सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो you must need to follow the prerequisite. System must be ठीक है। logged through the local administrator हुँ, and configure manual or static IP address, configure preferred DNS and alternate DNS. LAN हुँ, card must be active, means उसमें blink करना चाहिए LED, और हुँ, minimum 12 gig free space should be available in operating system drive. ओके। OS के तो अंदर लगभग ये 10 से क्या 12 क्या जीबी का इंस्टॉल स्पेस करने के लिए होता है है सर? ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी ये सर्विस इंस्टॉल करने के लिए. ठीक है. ओके, ओके। दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट जो इंस्टॉलेशन हुँ, के पहले आपको वेरीफाई करना है. ठीक है। सो आई एम गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट. पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें DHCP के थ्रू क्या आईपी मिल रहा है. आईपी कॉन्फ़िग करके हुँ, आई एम गेटिंग 1.5. ठीक है. 192.168.1.5. तो हमें क्या करना है, इस आईपी एड्रेस को फिक्स करना है. इफ यू प्रोसीड विद द सेम आईपी एड्रेस, इसी को हम फिक्स कर देंगे, या फिर हुँ, आप इसी रेंज में कोई भी आईपी फिक्स कर सकते हैं. ओपन ओके। ncpa.cpl. हुँ, इथरनेट के पेज पे आके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, IPv4 पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एंड टाइप द आईपी एड्रेस. ये आपको फिक्स रखना है, स्टैटिक रखना है, ताकि डीएनएस काम कर सके. ओके, 192.168. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद 65. ठीक है. ओके, गेटवे ओके, हमारे नेटवर्क का 1.1 है, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद 192.168.1.1. और प्रिफर डीएनएस, ऑलवेज पुट द सेम आईपी एड्रेस. जो आपकी मेन आईपी एड्रेस है ना, उसी हुँ, को हम यूज करेंगे एज ए प्रिफर डीएनएस. अल्टरनेट कोई सर्वर है नहीं, क्योंकि हम अभी तैयार कर रहे हैं. तो कैन वी ओके, प्रोसीड विद गूगल एड्रेस. ये आपका ग्लोबल एड्रेस, ग्लोबल डीएनएस एड्रेस कहलाता है. ठीक है, क्लियर. क्लियर। कॉन्फ़िगर द मैनुअल आईपी एड्रेस इन आवर सर्वर. ओके, एंड क्लोज कर देंगे. दिस इज द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट. एंड वी हैव अ इनफ स्पेस इन सी ड्राइव. अगर हम बात करें तो सी ड्राइव में अपने पास इनफ स्पेस है.
एंड वी लॉग इन आवर सिस्टम थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारी प्रीरिक्विजिट हमारे पास क्लियर है। नाउ इट्स ठीक है। टाइम टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, एडीडीएस सर्विसेज को हम इंस्टॉल करते हैं। टू इंस्टॉल द एडीडीएस सर्विस, सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, टूल्स पे जाएंगे। अभी आप देखिए कोई भी सर्विस एडी से रिलेटेड नहीं है, हम्म। आईएसकेजी इनिशिएटर ओडीबीसी डेटाबेस के लिए, राइट? बट वी आर यस। अनेबल टू फाइंड एनी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने कुछ नहीं। सिस्टम को अभी किस में रख रखा है, sysdm डॉट cpl चेक करोगे तो ये आप देखो वर्क ग्रुप में मशीन अवेलेबल है हमारी। हाँ, वर्क ग्रुप में। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट। 17 डिफरेंट रोल्स आर अवेलेबल। आपको दूसरा एडीडीएस रोल को सेलेक्ट करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। पहला स्टेप क्या कहता है, यू नीड टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। पहला आप एडीडीएस रोल को इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप पे जिसमें प्रमोट द रोल, इंस्टॉल द एडीडीएस रोल और उसके बाद प्रमोट द रोल। क्लियर? ओके। और एडीडीएस इंस्टॉलेशन के बाद आप देखिए कितनी सारी सर्विसेज बाय डिफॉल्ट अपने आप इंस्टॉल हो रही है। ग्रुप पॉलिसी, रिमोट सर्वर एडमिन टूल, रोल्स एडमिनिस्ट्रेटर टूल, ये सारी सर्विसेज आपकी बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लीमेंट में इंस्टॉल होगी। इनको सेपरेटली इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है। एडीडीएस रोल इंस्टॉल सक्सेसफुली, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट इट। प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ इंस्टॉलेशन। वी आर एबल टू फाइंड 3 डिफरेंट ऑप्शंस, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। मे नो द यूसेज ऑफ दीज ऑप्शन। Add a domain controller to existing domain. Add new domain to an existing forest. Add a new forest. No, sir. Okay, no problem. So add a domain controller to existing domain. So we don't have any domain controller, right? अभी तो अपने पास कोई डोमेन है नहीं, दिस इज द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर। इफ यू Yes. वांट टू मेक इट एडीसी, आगे हम पढ़ेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अगर आप Mm-hmm. अपने इन्वायरमेंट में एडीसी सेटअप करना चाहते हैं देन पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में सीडीसी सेलेक्ट करना चाहते हैं, सीडीसी मीन्स चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, इफ यू वांट टू Okay. सेट अप अ चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर देन सेकंड ऑप्शन। और सबसे लास्ट ऑप्शन आपका है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में एक नया सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं देन प्रोसीड विद ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। क्लियर? Clear. So you must need to provide the name in .com .local something करके। तो यहाँ पे Mm-hmm. हम अपना डोमेन बना रहे हैं विद नेम ऑफ class.com। ठीक है, दिस इज आवर डोमेन नेम, class.com। ठीक ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज which is related to the forest functional label and domain functional label, gc gc dns and rodc। ठीक है, Okay. तो साथ ही साथ डीएसआरएम का पासवर्ड भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो वी शुड नो Mm-hmm. अबाउट द यूसेज ऑफ दीज पॉइंट्स, मीन्स Okay. कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, किस तरीके से इसको रियल इन्वायरमेंट में हम यूज करेंगे। यूज करेंगे। It is in progress. Meanwhile, let's talk about the options that we are getting. यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल, राइट? और दूसरा है डोमेन फंक्शनल लेबल। Domain functional. So firstly, we just need to know about the gap between forest functional label and domain functional label. ठीक है? Mm-hmm. Basically, it's a type of replication. Okay. फॉरेस्ट का मतलब ये होता है ना, फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ डोमेन्स। Okay. फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं पहले। Mm-hmm. फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक सर्वर इस्टेब्लिश किया विद नेम ऑफ Mm-hmm. class.com के नाम से, आपने एक डोमेन बनाया।
class.com के नाम से। एक ठीक है। हमने एक सर्वर बनाया जिसमें हमने डोमेन नेम रखा cloud.com। दोनों अलग अलग सर्वर हो गए। हम्म। जब दोनों के बीच में ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते हैं ना, हम्म। दोनों के बीच में ट्रस्ट हम्म। इस्टेब्लिश करते हैं, कंसीडर एज ए फॉरेस्ट, इसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है फॉरेस्ट। ओके। ठीक है। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब है कि आपने एक डोमेन बनाया विद नेम ऑफ class.com। ठीक है। इसी क्लास से जुड़ा हुआ एक आपने बैकअप सर्वर बना दिया। हम्म। ये हमने बना दिया abc.class.com। ये हमारा क्या हो गया? एडीसी हो गया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब ये ठीक है। दोनों एक ही साथ जुड़े हैं तो ये क्या कहलाएंगे? डोमेन फंक्शनल लेवल। डोमेन फंक्शनल लेवल। इज इट ओके? हम्म। ये फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल कहलाएगा और ये आपका डोमेन फंक्शनल लेवल। बट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू चेंज इट? अब देखिए यहाँ पे चेंज करने का भी ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चेंज कर सकते हैं। बट व्हाई वी नीड टू चेंज इट? चेंज करने की रिक्वायरमेंट तब पड़ेगी जब आपके पास फॉरेस्ट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो अभी भी 2012 सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप 2016 इस्तेमाल कर रहे हैं। यू वांटेड टू ओके। मेक अ कम्युनिकेशन, दोनों के सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको फंक्शनल लेवल में ओल्ड वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके। क्लाउड कम्युनिकेशन डॉट एस्टेब्लिश। class.com that you establish over a server 2012, ठीक है? और cloud ठीक डॉट है। कॉम आप बना रहे हैं सर्वर 2016 पे। ठीक है। तो आपको फंक्शनल लेवल क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे? 2012 रखना पड़ेगा ताकि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इस्टेब्लिश कर पाओ। कंपैटिबिलिटी एस्टेब्लिश। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो, I'm not going to make any changes because I wanted to install each and every point from Windows Server 2016। हम्म। We have a specified domain controller capabilities जिसमें से पहला है DNS, दूसरा है global catalog GC, हम्म। and third number is related to the RODC. So हम्म। these three different options can help us to manage our domain controller. So can you please ठीक है। explain me the usage of these 3 points? Any idea about these 3 points? Like कब इसका इस्तेमाल करेंगे? डोमेन नेम सिस्टम्स का तो जस्ट आई हैव आइडिया। डोमेन नेम system is used to resolve the user query, fqdn to IP address and IP address to fqdn. Am I correct? Again. Domain name system is mainly used to resolve the user's query like fqdn to IP address and IP address to fqdn. Correct. Name resolution, we can say that Yes, yes. it is used for the name to resolve the name, IP to name, IP name to IP, vice versa. Yes, yes, correct. DNS can help us. What about GC? Global catalog, theoretical तो just I know theoretically sir. Okay, global catalog, as per the name suggests, responsible to contain the attributes of our active IT users। जो भी हम users Yes, तैयार करेंगे उनके attributes की information contained by the global catalog and it's mandatory। ठीक है। जब yes, आप yes, पहला yes. सर्वर इंस्टॉल करते हैं रियल इन्वायरमेंट के केस में, जब आप पहला Mm-hmm. सर्वर इंस्टॉल करते हैं रियल इन्वायरमेंट के केस में, यू मस्ट नीड टू मेक इट ग्लोबल कैटलॉग। उसको आपको Global. मैंडेटरी या ग्लोबल कैटलॉग क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर अनेबल टू लॉग इन, यू आर अनेबल टू लॉग इन योर मशीन Mm-hmm. थ्रू क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट में आप उसको लॉग इन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट अनदर पॉइंट इज आरओडीसी। वी आर नॉट ऑथराइज टू मेक इट आरओडीसी। हम इसको आरओडीसी नहीं क्रिएट कर सकते बिकॉज ऑफ आरओडीसी के केस में क्या होता है कि रूट डोमेन कंट्रोलर को कभी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं क्रिएट किया जा सकता है। द रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कैन मैनेज बाय द, जब आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे दैट टाइम वी नीड टू यूज अ आरओडीसी। ओके।
ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, जस्ट नीड टू प्रोवाइड डीएसआरएम पासवर्ड। यहाँ पे आप कोई सा भी पासवर्ड दे सकते हैं। So जी, question, why we need to use DSRM password? So DSRM password as per the name suggests directory service restored mode, ठीक है? करेक्ट। Directory service restored mode, तो directory service restored mode basically it's a type of backup, ठीक है? अगर हुँ, आप अपने हुँ, सिस्टम में बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं, बैकअप फॉर सिस्टम स्टेट बैकअप, कई तरीके से बैकअप होते हैं। अगर आप हुँ, हुँ, सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एंड यू वांटेड टू बैक रिवर्ट बैक मींस रिस्टोर करते समय, दैट टाइम यू हुँ, नीड हुँ। टू प्रोवाइड द आईपी, दैट टाइम यू नीड टू प्रोवाइड द डीएसआरएम पासवर्ड पासवर्ड। ऑफ डीएसआरएम पासवर्ड, ठीक है? वी विल हुँ, डिस्कस हुँ, अबाउट सर्वर बैकअप। नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये बायोस नेट बायोस नेम आएगा जो डोमेन हमने सेलेक्ट किया था क्लास के हुँ, नाम हुँ। से। नेक्स्ट class.com, proceed to install. Install and finish. Installation is in progress. तो AD installation के बाद we need to install few client machine, right? Client operating system हम install करेंगे, maybe Windows 10, Windows 11 operating system, Windows 8 और Windows 7, कोई सा भी OS हम install कर पाएंगे, correct? ओके। सर जैसे ये अभी तो आपने इंस्टॉल कर दिया, ये चीज़ मैं इंस्टॉल कैसे करूँ? मतलब कोई वीएम पर उस पे जाके करूँ या कैसे करूँ? नहीं 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 नहीं, आप अगर आपका बेस मशीन आप ऑफिशियल लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें हम वर्क स्टेशन नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। सो दैट्स वाई प्रैक्टिस के लिए आई शेयर माई मशीन विद यू इन वीकेंड, हुँ, जहाँ पे आप हुँ, प्रैक्टिस हुँ। करोगे। ओके, ओके। देखिए, सर्वर के प्रैक्टिकल के लिए कम से कम अपने पास 16 गीग रैम एंड अप टू 4 कोर ऑफ प्रोसेसर होना चाहिए ना। हुँ, हुँ, हुँ। ऑफिशियल लैपटॉप में कितनी भी रैम हो जाए बट वो ऑथराइज नहीं करते टू इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी टूल्स, करेक्ट, करेक्ट। है ना? वैसे मोस्टली 32 या 16 गीग रैम बेस्ड थिन पैड मिलता है, बट वी आर नॉट ऑथराइज टू मेक एनी चेंजेस बाय सेल्फ। करेक्ट। Now installation is started. It will check the entire prerequisite and after that machine will restart. ओके। सर जो आपने ये 2016 इंस्टॉल किया सर्वर 2016 इसका आईएसओ इमेज आपने कहाँ से लिया था? इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। वी आर एबल टू यूज इट फॉर 60 डेज, ठीक है? तो अगर 60 हुँ, डेज हुँ, तक आप मीन्स टेक्निकल ट्रेनिंग पर्पज के लिए, टेस्टिंग पर्पज के लिए इट्स हुँ, इनफ टू हुँ। यूज द evaluated of ISO. ओके, ओके। Even Microsoft also suggested to, if you want to perform the practical task, तो definitely आपको ये वाला ISO image use करना चाहिए। हुँ, हुँ।
Now, complete. Installation completed. You must need to restart your machine, and after that, we'll get details of our Active Directory domain services. Okay. After installation of Active Directory domain services, definitely it will take time क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज बैकएंड में इसकी इंस्टॉल होती हैं एडीडीएस के साथ. ओके। ये आपने सिर्फ VMware परचेज कर रखा अपना? वीएमवे फ्री ट्रायल मिल जाता है मीन्स गिटहब पे ना इसकी कीज मिल गई है तो आई हैव ऑलरेडी सेव्ड इट अपने पास है मीन्स लाइसेंस की फॉर वीएमवे वर्कस्टेशन 16 प्रो.
ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर ये? Yeah, already started. Done. So we successfully installed the Active Directory domain services. Class.com के नाम से हमने install किया था domain, and now we are able to use the Active Directory services. Tools पे जाएंगे. Under the tools, we will find the option related to Active Directory users and computers, and it will give you the information about class.com. और इस particular option की help से we are able to create a users, group, computers and organizational unit. ठीक है. ठीक है। ठीक है, तो आगे जो डिस्कस करना है हमें, पहले हमें एक क्लाइंट मशीन इंस्टॉल करनी है, एंड वी विल यूज द क्लाइंट मशीन टू यूज द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर. ओके। डन. सो ये नेक्स्ट कर लें कल की क्लास में. हाँ जी, हाँ जी। चलो, विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन 1 आवर बिकॉज इट विल टेक टाइम, तो कन्वर्ट करके मैं आपको शेयर करता हूँ. ठीक है. ठीक है सर। कल मिलते हैं सेम टाइम पे. टेक केयर. बाय बाय. ओके सर।